Very good morning all. Today we will revise first chapter of accounts, introduction to partnership. We will start with theory topics. Theory topics I'm not taking in detail. Yes, you can revise with uploaded videos. So here I'm just giving overview. Then the most important two sums which I gave you in homework, I'll explain today by this video. Now here first we will start with introduction, where some limitations of sole proprietorship is given which leads to emergence of partnership firm. Yes, जो first need है which leads to emergence of partnership firm is not having required skill. It means lack of skill. If person is not having skill, that person can opt partnership firm. Then second, an individual has required skill but does not have sufficient fund. It means lack of funds. If person is having skill but that person doesn't have funds, he can opt partnership firm. Then third, to distribute business risk. अगर कोई person को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है और वो बिजनेस स्टार्ट करने में काफ़ी रिस्क है, सो दैट पर्सन कैन ऑप्ट पार्टनरशिप फर्म by which the risk will be distributed among partners. So these are the limitations of sole proprietorship which leads to emergence for partnership firm. Then meaning and definition of partnership firm. Here Section 4 of Indian Partnership Act 1932 defines partnership is the relation between the person who have agreed to share the profit of the business carried by all और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको लर्न करनी है एंड इट इज़ वेरी सिंपल टू लर्न. सी, पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन द पर्सन. पार्टनरशिप क्या है? तो एक रिलेशन है कुछ लोगों के बीच में. येस, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस. उन्होंने एग्री किया है कि उसके बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा वो शेयर करेंगे. येस, एंड दिस बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. नाउ ये जो बिजनेस है वो या तो एक पर्सन, एक पार्टनर एज ए एक्टिव पार्टनर वर्क कर सकता है या सारे साथ में मिलके एक्टिवली पार्टनरशिप फर्म के लिए वर्क कर सकते हैं. यस, देन ये जो फर्म है उसे हम बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म. यस, और जो भी इसके ओनर्स हैं, जिन लोगों ने साथ में मिलके ये फर्म स्टार्ट की है, दे आर नोन एज पार्टनर्स. नाउ हियर आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप. Creation by contract. It is emerged with contract. Yes, that might be oral or written, but written is advisable. Then profit objective. They must have objective of earning profit which they agree to distribute. Then third, legal business. That business must be legal. Yes. Then agent for each other. See, if all partners are working, all are active, they can run their partnership firm. But if one person is acting for all, that means that person is agent for other partners. Yes. The number of partner in recent Companies Act 2014 under the rule 10 is 50 is maximum limit for partnership firm. Then unlimited liabilities, as in sole proprietorship जो ओनर है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, वैसे ही पार्टनरशिप फर्म में जो भी पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी. अगर इन फ्यूचर फर्म के कुछ ड्यूज़ हैं और फर्म के ड्यूज़ पे करने के लिए जो पार्टनर्स हैं वो लायबल है, सो दे हैव टू सेल देयर पर्सनल प्रॉपर्टी टू पे द ड्यूज़ ऑफ फर्म. देन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. सी, ऑल पार्टनर्स आर ऑल ओनर्स. जो भी पार्टनर्स हैं उन्होंने साथ में पार्टनरशिप स्टार्ट की है, सो दे ऑल आर ओनर्स. बट हो सकता है कि मैनेजमेंट कुछ पार्टनर्स ही कर रहे हों. यस, सो ओनर्स सभी पार्टनर हैं बट मैनेजमेंट माइट बी डन बाय ऑल और एनी ऑफ देम. देन पार्टनरशिप डीड. जो पार्टनरशिप डीड है वो रिटन कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सारे पॉइंट्स, सारे प्रोविजंस पार्टनरशिप के मेंशन किए हुए हैं. यस, एंड written partnership deed is advisable because if in future any conflicts arise among partner, how they will find the solution. जो भी problems future में हो रही है profit distribution को लेके या कोई interest को लेके, so they will decide on the basis of partnership deed. So कुछ important details ये written contract में partnership deed में mention होनी चाहिए. Now see, these details must be mentioned in partnership deed. Details of partner, details of firm, type of business,
commencement of partnership, capital at what amount, what is contribution of capital from partners, interest on capital, what interest will be paid, drawings, yes, the maximum limit at what partner can withdraw, then interest on drawing, what interest will be charged on partner's drawing, then distribution of profit and loss, how they will distribute future profit or loss, yes, then salary, bonus, commission, remuneration to partner, if partner is giving more efforts or working more than other partners, and that partner is entitled to get salary, bonus or commission and remuneration, so that must be mentioned in partnership deed. Then interest on loan provided by partner to firm, if partners are providing loan to partnership firm, what interest will be given to them, yes. Then about goodwill, retirement, admission, dissolution of firm, some future events which might be occur in partnership deed, some provisions pertaining to those matters must be mentioned. देन इसके अलावा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसमें अबाउट सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सी अगर डीड नहीं है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, या कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं है डीड में, तो हम सारे प्रोविज़न जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में है वो हम फॉलो करेंगे, यस। सो कुछ प्रोविजंस मेंशन है वो हम देखेंगे which we can apply in the absence of partnership deed. See, first, each partner contributes capital in the firm by mutual agreement. See, there is no compulsion. उनकी mutual agreement के हिसाब से वो अपनी capital ले आएंगे. Then second, interest on capital of partner cannot be paid. See, if there is no instruction about interest on capital, no interest will be paid. Same, if interest on drawing of partner is not mentioned in deed, so we will follow Indian Partnership Act, no interest will be charged. Then distribution of profit and loss would be remain equal. If they forgot to mention the profit and loss sharing ratio, so they have to distribute future profit or loss in equal ratio. Then salary, bonus, commission, remuneration cannot be paid. See, if any partner is entitled to get salary, bonus, commission or remuneration, that must be mentioned in deed. If they forgot, if it is missing in partnership deed, no salary, bonus, commission, remuneration will be paid. Then 6% per annum interest is payable for the loan given by any partner to the firm. If partner is giving loan and there is no clarification about interest on partner's loan, so 6% interest will be paid. Then 7th, in case of any reasonable expense incurred by the partner for the firm, the partner has right to reimburse it. Now see, if partners are paying on behalf of firm, so that partner is entitled to reimburse it. It means those expenses which is paid by partner on behalf of firm, they can get from firm, yes. अगर कोई भी एक्सपेंस पार्टनर ने फर्म की जगह पे पे किया है, फर्म की तरफ से पे किए हैं एंड खुद के पैसे पे किए हैं, सो दैट पार्टनर कैन गेट फ्रॉम फर्म, वो फर्म से पैसे वापस ले सकता है, रीइम्बर्समेंट हो सकता है. So these are some provisions of Indian Partnership Act 1932. Then इसके अलावा मैंने आपको कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन करना है, कौन सी दो मेथड है, वो पूरा डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वो भी आपको प्रॉपरली पढ़ना है. सी यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, इट इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. सो two methods of maintaining capital account, then directly the difference between two capital account methods. Yes, I had explained you this too. So revise all these theory points. The drawings account, we are not maintaining drawings account. Drawings account is closed with partners capital account with this entry. See, generally partners drawing is debit. Yes, so now we are closing, so partners drawing account credit and partners capital account will be debited. Then format of P&L appropriation account, this is already explained to you. Yes, let me clear. P&L appropriation में जहाँ पे भी interest on debit balance of current account या interest on credit balance of current account दिया हुआ है, वो मैंने कवर नहीं करवाया है. So current account से related ये दो वो आपके UT में नहीं है. So don't be worried
if it is mentioned in P&L appropriation account, then the difference, just revise this difference, and then journal entry and how we are posting in P&L appro and partners capital. इसका वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है. This topic I had explained you with video. So revise these all entries and the concept of P&L appro and partners capital account. Then the most important MCQs where you can score good marks. So here I am just giving you the highlights. You can just mark in your textbook. See what is the interest on partners capital for partner. See जो interest है capital का, yes, partner is getting from the firm, firm is paying. Here you are asked about partner. ये जो interest है वो partner के लिए क्या है? Yes, so partner को तो receive हो रहा है, so it is income for partner. Then under which method the interest on capital keeps on changing during the year due to the changes in capital account. सी इंटरेस्ट कब चेंज होगा? जब कैपिटल का बैलेंस हर बार चेंज होगा. येस, सो इट इज़ अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड, जहाँ पे कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस हर बार अलग अलग आएगा और उसका इंटरेस्ट भी अलग अलग कैलकुलेट होगा. देन इन विच अकाउंट एंड ऑन विच साइड शेयर ऑफ पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट इज रिकॉर्डेड अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड. कौन से अकाउंट में कौन सी साइड पार्टनर्स का जो शेयर है प्रॉफिट का वो रिकॉर्ड होता है. यस, सो कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करते हैं और क्रेडिट साइड पे. यस, सो वी आर गिविंग टू पार्टनर्स, सो पार्टनर्स अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड. देन एट द एंड ऑफ the year where will you transfer drawings account in fixed capital account method. See fixed capital account method पूछी है तो फिक्स्ड कैपिटल में तो कैपिटल फिक्स ही रहेगी. येस, सो यू हैव टू ट्रांसफर द ड्रॉइंग्स अकाउंट बैलेंस इन करंट अकाउंट. येस, आई हैड एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एंड करंट अकाउंट. देन फिफ्थ क्वेश्चन वेयर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट बैलेंस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड which is not in your syllabus. So I had ticked the answer, but this will not be asked in your exam as I had not explained you the interest on current account balance. Then sixth, what is the interest on drawings of partner for partner? Again it is asked for partner. Yes, हम देखेंगे partner के लिए क्या है interest on drawing. See partner is taking from the firm, so partner will pay. Yes, partner will pay interest on drawing. So partner pay कर रहा है partner के लिए expense है, A an expense. Then seventh, debit balance of P&L appropriation account means, see debit balance, debit it means all expenses and losses. Yes, so it is divisible loss. Then what percentage of interest will be paid when no provision is made pertaining to interest on capital. See interest on capital की बात की है, अगर उसका interest mention नहीं है deed में, so as per Partnership Act 1932 no interest will be paid. Yes, so the correct answer is option D, no interest. Then ninth, what percentage of interest will be paid on the loan lent by the partner to the firm when no such provision is made in partnership deed. See अब interest on loan की बात की है, अगर उसका interest rate deed में mention नहीं है, so we will follow Indian Partnership Act 1932. Yes, so 6% interest will be paid. Then 10th MCQ, the capital proportion of A, B and C is 3:2:1 respectively. The divisible profit is 66,000. What will be the amount of profit of partner C? Now see ये question काफ़ी बार एग्जाम में भी आया हुआ है. It is just to confuse you. The capital proportion is given. See यहाँ पे ये जो proportion दिया है वो capital proportion है. Yes, so you don't have to distribute the profit in this ratio. There is absence of P&L ratio. P&L ratio नहीं दिया हुआ है.
So you have to distribute this profit equally. It means 1:1. Yes. So partner C will get 22,000. See, you can find in this way. The ratio is 1:1. So C's share is equals to total profit 66,000 multiply C's share, that is 1/3. So you will get 22,000. Then revise the theory from uploaded videos. Yes, 1 mark or 2 mark questions might be asked. Then in exercise, we have done first, fourth sum. The second and third was given in homework. So here I'll present you the solution of second and third sum. Many of you have sent me the solution. Yes, you can compare with this video. See, first we will solve the second one. Amruta and Divya are partners of a firm. Their capital ratio is 3:2. Again, see, this is capital ratio. And we are distributing profit in P&L ratio. Yes. So, this ratio is given just to confuse you. Yes. So, just ignore this capital ratio. Then, Amruta is to be paid 8% commission on net profit after deduction of such commission. If you remember in last lecture, we have done this point, the calculation of commission before and after deduction of such commission. So this is after deduction. So we need to apply the formula. Yes. See, the net profit is given. The profit of the year is 96,876. And at last, you need to find what amount will be received by Amruta. अमृता को कितनी अमाउंट मिलेगी. सो एक तो उसे कमीशन भी मिलेगा बिकॉज शी इज एंटाइटल्ड टू गेट द कमीशन. येस. एंड द सेकेंड थिंग, share in profit. Yes. So here we can calculate with these steps. See, I have written all the details. 2 partners and their capital ratio, which we will not take. See, P&L ratio is not given, so we will consider 1:1, that is equal ratio is P&L ratio. Clear? Then see, Amruta's commission is 8% after deduction. So we will apply the formula. So here we can find the amount of commission with this formula. 96,876, the profit which is given. Multiply 8, that is percentage rate of commission. Then divided by 100 plus percentage. So 100 plus 8, 108. So here you can find the amount of commission. अब हमारे पास टोटल प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट है वो है और कमीशन भी है. इफ़ वी डिडक्ट दिस कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट, वी कैन गेट द डिविजिबल प्रॉफिट. अब हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये तो पूरा प्रॉफिट है, इसमें कमीशन इंक्लूडेड है. येस. सो फर्स्ट वी विल डिडक्ट द कमीशन अमाउंट फ्रॉम दिस प्रॉफिट. येस. अगर हम कमीशन माइनस कर देंगे तो हमें जो प्रॉफिट मिलेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट है, which we can distribute among partners. There are 2 partners, so we will distribute this profit in equal ratio 1:1. So the profit is the divisible profit which is remaining for both partners, 89,700 multiply Amruta's share as per 1:1 ratio. Amruta will get 1/2. So Amruta will get profit 44,850. Yes. Now see, we have amount of commission and we have share of Amruta in profit. Yes. So we will add both amount and we can find the total amount which will be received by Amruta. So here amount received by Amruta is equals to share in profit plus commission. So you will get 52,026 rupees, that is the total amount received by Amruta. Here I am showing all the steps so it will be more clear. See, जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हमने कमीशन की अमाउंट ढूंढी है. येस. द अमाउंट ऑफ कमीशन विथ फॉर्मूला. ठीक है.
देन जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से कमीशन माइनस करके डिविजिबल प्रॉफिट. यस, देन वी हैव distributed profit and we need to find the share of Amrita, and finally the total amount received by Amrita, as Amrita is entitled to get commission as well as share in profit, so both amount will be added and the total amount 52,026 rupees will be received by Amrita. Now third sum, Vismay, Abhijit and Kunal are partners sharing profit loss in the proportion 3:2:4. Manager is to be paid 10% commission on profit but after deduction of his such share. The share of profit of Abhijit is 30,000. You need to find the amount of commission. Yes, so here is the solution. See, three partners, their P&L ratio is given. Manager is to be paid 10% commission on net profit after deduction of his share. In this sum the total profit is not given. Yes, अगर आपको net profit दिया होता तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते. yes, बट यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं दिया है. यहाँ पे अभिजीत को 30,000 मिल रहे हैं, सिर्फ इतनी डिटेल दी है. सी, व्हेन वी हैव detail about one partner's share in profit, we can find the total. या हम दोनों का अलग अलग ढूंढ सकते हैं एंड टोटल वी कैन फाइंड. यस, कि टोटल कितना है, या आप अभिजीत की प्रॉफिट की डिटेल से डायरेक्ट टोटल प्रॉफिट कितना है वो आप फाइंड कर सकते हो. ठीक है, इस टाइप का एक इलस्ट्रेशन मैंने करवाया हुआ है. सी, विथ दिस स्टेप यू कैन फाइंड द टोटल प्रॉफिट. अभिजीत का शेयर जो है वो 2 है. यस, और जब उसका शेयर 2 है तो उसे प्रॉफिट शेयर 30,000 मिल रहा है. यस, और प्रपोर्शन का अगर हम टोटल फाइंड करें, सी द प्रपोर्शन इज गिवन 3:2:4 एंड द टोटल इज 9. सो टोटल प्रॉफिट कितना होगा? सो हियर यू कैन फाइंड विथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 9 multiply 30,000 divided by 2, so you will get 1,35,000. that is total profit. yes, total divisible profit. see, अब यहाँ पे जो प्रॉफिट आया 1,35,000, ये डिविजिबल प्रॉफिट है, इसमें कमीशन नहीं है. कमीशन इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस प्रॉफिट. यस, सो इट इज डायरेक्टली आफ्टर डिडक्शन. ये जो प्रॉफिट है वो आफ्टर डिडक्शन ही है, इसमें कमीशन नहीं है. यस, दिस इज डिविजिबल प्रॉफिट. सो ये आफ्टर डिडक्शन अमाउंट ही है. सो विदाउट फॉर्मूला डायरेक्टली वी कैन फाइंड द अमाउंट ऑफ commission. See, commission is equals to 1,35,000 multiply 10%, so 13,500, that is the amount of commission. So revise all textual illustration 1 to 4. yes, आपकी टेक्स्ट बुक में जो इलस्ट्रेशन है 1 2 3 4 वो आपको रिवाइज करना है. जो एक्सरसाइज में 4 सम हमने किए हैं वो भी आपको रिवाइज करने हैं. and the theory part you can revise from 7 videos uploaded on YouTube. जो YouTube पे मैंने वीडियोस अपलोड की थी, जो इनिशियली मैं वीडियोस के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रही थी, वो आप रिवाइज कर देना. yes, उसमें थ्योरी भी है और 3 इलस्ट्रेशन भी है जो आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे कवर नहीं हुए हैं. yes, so you can revise the theory and 3 illustration which are not textual. yes, वो illustration भी बहुत important है. so revise theory and illustration from uploaded videos. Except all these things, there are some long questions or short notes that you can cover from theory. yes, the most important thing यहाँ पे जो current account का question है short note में, वो आपको नहीं करना है. yes, करंट अकाउंट का बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा बट डिटेल में करंट अकाउंट के इंटरेस्ट के साथ वो सब चीज़ें नहीं आएगी. ठीक है, सो बेसिकली अब तक मैंने जो भी आपको एक्सप्लेन किया है, मैंने जो भी आपको पढ़ाया है, वो कुछ भी आ सकता है. यस, सो प्रिपेयर दिस चैप्टर वेल. कोई भी डाउट है, कहीं पे भी क्वेरी है, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी. यस, यू हैव इनफ टाइम टू रिवाइज.
tomorrow is holiday, so revise this chapter properly. If you have any doubt, feel free to contact me.